Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. म्यूट का ऑप्शन नहीं है आपके पास? ऑल म्यूट का ऑप्शन नहीं है, कर दीजिए, शुरू में कर दीजिए, आधा घंटा बाद। अच्छा, Okay. Good afternoon to all the respected members of State School Buxar. You all are welcome in our teacher training. Myself, Ashwani Kumar, PGT, Social Study. Today we discuss about the topic how to make effective and interesting of social study teaching. चलो, हाँ होगा, हम तो जाएंगे, अब किसी का नहीं जानते। We all know that, and we all know and think about the make effective and to knowledgeable of our subject. And one thing I want to know that everyone and every teachers wants to make a favorite teacher to the students. About in the favor of the students, students always say about you. My favorite teacher is social study teacher. My favorite teacher is mathematics teacher. It means to say everyone want to make the best. Everyone to make the best teachers of their subject. So in this way, we all have new ideas and new strategy to input in our subject, to explore, to give new ideas to make easy of your subject. And the second thing, if you want to make a good teacher in our social study, then the time has come to change your teaching methodology. Without this, we can't make a good teacher. If you want to improve ourselves, if you want to give a good information to the students about your subject, we have a new strategy and we have a new ideas, new concept to put in your mind in your students. And first of all, we think about the students. The students which we are available in our class, the students have a different mindset and different concept. The students belongs to the different societies and different sections of our country, in our district and in our village areas. These all are. Means to say, we have firstly think about the nature of the students. The nature of the students have what want and what the needs. First of all, we think about the needs to the needs of the students, and also we also want to know the nature of the students. The students have a two type in our class, like that fixed mindset and the growth mindset. The fixed mindset students always think about this is the natural, and the growth mindset students always try to new things, always try to improve it. Means fixed mindset students beliefs, उनका ये मानना है कि जो है ना वो नेचुरल है, हम वो नहीं कर सकते हैं जो कि दूसरा कर सकता है. The people with fixed mindset believe that the skill, intelligence, and talent are natural. अगर मान लीजिए हमारे क्लास में अगर कोई सुरेश नाम का स्टूडेंट,
another students think about the Suresh. Suresh is a intelligent student and talent, and this talent and this intelligence is for natural. यह उसकी अपनी है, ये जो बर्थ किया है ना वहीं से उसको आया है, ये सिर्फ वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते. And the failure is the shameful and shameful and should be avoided. Some people are naturally good at things while others are not. उनका ये मानना है कुछ ही लोग अच्छा कर सकते हैं. Everyone is not complete. Everyone cannot do like the Suresh, like the particular one student. उनकी ये मानना है कि वो वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं. You are not in control of your abilities. हम अपनी योग्यताओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. हमारे पास जो योग्यता है ना उसी को हम सिर्फ अपने बनाए रखते हैं, वो लाइक हम उसमें इंक्रीज नहीं कर सकते. दिस इज द बिलीव्स ऑफ द फिक्स माइंडसेट. बट इन द अपोजिट ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट, द पीपल्स विथ ग्रोथ माइंडसेट बिलीव दैट you have the capacity to learn and grow your skills. The growth mindset students think about we have to, we can do, and we can do this. We will try, we will try, if we will try, we can do. The fix and the growth mindset, this is the change. And the second one is the failure is the valuable lesson. If the growth mindset students fail in any works, then they are not stop working, they are try to next. वो अपने काम को छोड़ते नहीं हैं, वो अपने काम को समाप्त नहीं करते हैं और ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं. वो उस काम के मिस्टेक्स, उसके फेल्योर्स के रीजंस को फाइंड आउट करते हैं. देन आफ्टर दे विल स्टार्ट, वो पुनः स्टार्ट हो जाएंगे, करने लगेंगे. एंड दे ट्राई टू डू बेस्ट. The people who are good at something are good because they build that ability. लोग उनका ये मानना है, think positive, do positive and be positive. It means to say the growth mindset people know and ideas have think it we can do better and be positive. अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा ही. And this is the positive natures about the growth mindset, and this is the beliefs. And the next one is the fixed mindset efforts. Efforts of the fixed mindsets, not necessary or useful. It means see effort as a negative things and something you do when you are not that good. जब आप कुछ काम करते हैं और वो काम अच्छा नहीं हो पाता है, हम उसको सक्सेस नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स वी थिंक वी आर नॉट एबल टू डू दिस. हम ये क्या सोचते हैं या सोचने लगते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं. द एफर्ट्स ऑफ द फिक्स माइंडसेट थिंक अबाउट दिस आइडिया, बट इन अपोजिट द एफर्ट्स ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट, important part of the process, focus on the process of the getting better. Efforts of the growth mindset people and the students think about the process of the getting better. अगर उन्होंने काम किया है, अगर वो सक्सेस नहीं है तो उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, उसमें और सुधार करते हैं, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं. If get the mistakes, if find out the mistakes, then they will success. वो हो जाएंगे. The things, the ideas, about the growth mindset. And the third one is the challenges of the fixed mindset. If the fixed mindset students face the challenge, so what the ideas? To back down and avoid challenge. If the fixed mindset students have faced the challenge, then avoid.
But in opposite, the growth mindset students take this challenge. यदि हम अपने challenges को take नहीं करेंगे तो हम सक्सेस कैसे हैं, या हम न्यू थिंग्स को जानने का अवसर खो देंगे. फिक्स माइंडसेट स्टूडेंट्स चैलेंज को लेते ही नहीं, छोड़ देते हैं. लाइक दिस, टीचर्स के द्वारा होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क उनके बुक्स में ही है, उनके कंटेंट्स में ही है, रीड करना है, फाइंड आउट करना है. बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डू दिस, उसको कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बुक्स के कंटेंट्स को सर्च किया है और देन दे फाइंड आउट, तब जाकर के उन्होंने उसके आंसर को फाइंड आउट किया है. हम अपने क्लासरूम के बिहेवियर्स को इन दो माइंडसेट के स्टूडेंट्स के रूप में देखते हैं. द चैलेंजेस अवॉइडेड बाय द फिक्स माइंडसेट एंड द ग्रोथ माइंडसेट, द चैलेंजेस embrace, take the challenge and crack the challenge. Then the students have personalities are developed once at a time. Next one, the mistakes. The mistakes of the fixed mindset students, mistakes avoid. Get discouraged when making mistakes and avoid them. जब कोई गलतियां हो जाती हैं बच्चों से तो उस मिस्टेक्स को उन्होंने अवॉइड किया और उस गलतियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको छुपाने का प्रयास करते हैं. एंड उस गलतियों को छुपा करके और छुपाने में और 1, 2, 3, 4, 5, 6 गलतियां और कर जाते हैं. द मिस्टेक्स ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स improve, see the mistakes and learning opportunities and ways to improve. Mistakes सबसे होती हैं, गलतियां तो सबसे होंगी, क्योंकि no one complete in this world. इस विश्व में कोई भी कंप्लीट नहीं. Everyone try to improve yourself in whole life. पूरे जीवन में हम जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक सीखते हैं. We are the learners. हम सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं, आसपास के सोसाइटी से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, ग्राउंड्स में बच्चों के साथ होते हैं तब सीखते हैं, असेंबली में सीखते हैं. These all are the all areas of our schools and our societies teach us, and we learn from this. The fixed mindset students, the feedback, the defensive. फिक्स माइंडसेट स्टूडेंट्स डिफेंसिव. अगर वो सोचते हैं गलतियां हो गई तो मैं मार खाऊंगा, मुझे और पनिश किया जाएगा, वो उस गलतियों को छुपा लेते हैं और उस गलतियों को छुपाने के लिए 2-4 और गलतियां कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं. इसका क्या इफेक्ट होता है? उनके जो डेवलपमेंट है या उनका जो माइंडसेट है, उनका जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है. ग्रोथ माइंडसेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव, they appreciate feedback and use it, learn from the criticism. अपनी बुराइयों से सीखते हैं. अगर हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, हम उन बच्चों से यदि यह पूछें या उनसे या किसी एक बच्चे की अगर मिस्टेक्स हैं और किसी दूसरे बच्चे की भी गलतियां, दोनों गलतियों को अगर बताते हैं तो फिक्स माइंडसेट स्टूडेंट्स उन गलतियों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अफेक्टिव होते हैं और उसको इम्प्रूव में नहीं लेते हैं या उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते. बट ग्रोथ माइंडसेट टू डू दिस, टू इम्प्रूव योरसेल्फ, मीन्स टू से द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच द स्टूडेंट्स वन, we should must to find out the nature of the students, and we have a duty to change the mindset of our student before the teaching the subject. यदि हम बच्चे के किसी विषय के माइंडसेट को यदि बदलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके आइडियाज को अगर हम चेंज करते हैं, इट मीन्स टू से हम आधे अपने सब्जेक्ट की लर्निंग को कर लिए. अगर हमने बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास किया तो आधे हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं.
बच्चे के फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करना, दिस इज द मेन थिंग्स, दिस इज द मेन ड्यूटी फॉर टीचर. द नेक्स्ट वन इज, if you want to change the nature of the students, so let's learn some tips to make social science and teaching effective. If we want to change the concept, change the ideas about the students, so we have learned some tips to make social science teaching effective. Here is given the one tip. Before we discuss the tip one, every teacher I know want to find way to make their social study lessons more engaging for student. Social study subject is a generally know that it is too boring. ये काफी बोरिंग होता है, इसको लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, लर्न करना होता है. बट वी थिंक द सोशल स्टडी आर नॉट एनी सब्जेक्ट, इट इज द स्टोरी, इट इज द फिल्म, इट इज द नेचर विच वी स्टडी. हम सोशल स्टडी कोई सब्जेक्ट नहीं, सोशल स्टडी हम नेचर्स में जो देखते हैं उसको स्टडी करते हैं. सोशल स्टडी विथ अस, अराउंड अस. हम सोशल स्टडी को अपने सोसाइटी में देखते हैं, सोशल स्टडी को प्लेग्राउंड में देखते हैं, सोशल स्टडी को अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल्स, क्लास में देखते हैं. दिस इज द मेन थिंग्स अबाउट द सोशल स्टडी. The good news is that there's a lot of ways to make social study more fun for kids. If we want to make effective our subject, if we improve our students' knowledge, then we must to use the new strategy, new ideas about the subject to give the students. Let's knowledge. Tip one, knowledge. You should have thorough knowledge of your subject, a chapter. Before to teach the subject, it should be must to learn this, to read this chapter. If we have a complete knowledge, if we have a point-to-point concept clear of the teachers, then teachers explain in own ways and make a effective. उसको और प्रभावकारी तरीके से मॉडरेट कर सकता है, उसको स्टोरी बेस्ड या फिर फ्लो चार्ट बेस्ड या फिर फोटोग्राफ्स, वीडियोस बेस्ड उसको बना करके प्रेजेंट कर सकता है. तब जाकर के वो सब्जेक्ट और भी इफेक्टिव हो. Tip one, we can say that it seems obvious that if you are going to teach a subject, then you should really know a lot about the subject, right? पढ़ाने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट के, अपने चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए. Then we can teach well. Certainly, in secondary and senior secondary schools, where teachers often specialize into one or two subject areas, there is a real emphasis on subject matter knowledge of the teacher, which is why the claim goes that if you want to teach history, you should first learn a lot about history. यदि हम इतिहास को पढ़ाना चाहते हैं तो हम हिस्ट्री के सारे स्टेप्स को लर्न करना होगा, रीड करना होगा और डिफरेंट रिसोर्सेज से हमें उसकी स्टडी करनी होगी. देन आफ्टर उस कॉन्सेप्ट को, उस इवेंट्स को अरेंज करके और बच्चों को प्रेजेंट करना हो ताकि वो इफेक्टिव हो, ताकि वो प्रभावकारी हो. नेक्स्ट, टिप 2 is given here. Lesson planning. Before entering the classroom, we should be must to lesson plan in our hands.
Lesson planning is very necessary to each and every teachers, to each and every subject. Always go prepared to the class. Always go prepared to the class. क्लास में अगर एंट्री कर रहे हैं तो उस क्लास में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंडसेट को समझना, तब जाकर के हम उसमें बेस्ट टीचिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लास के जो बिहेवियर है, नेचर्स हैं, स्टूडेंट्स के माइंडसेट हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो हम उनके अनुसार अलग अलग तरह के प्रिपरेशंस, अलग अलग तरह के आइडियाज, कॉन्सेप्ट को वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब जाकर हम बेस्ट टीचिंग को कंप्लीट करेंगे। योर बुक शुड हैव, टीचर्स के पास बुक्स का होना जरूरी है। योर वर्ड्स मीनिंग, विदाउट वर्ड्स मीनिंग वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी। अबाउट द टीचर्स say something about the history and about past, so the students have must do the word meanings. If the students understand the words, then the concept will be clear. The next one is the flow chart. If you make effective social science, make a flow chart. Here is given the one flow chart is in history, from history. Here is the Delhi Sultanate Khilji dynasty. Alauddin Khilji, Jalaluddin Khilji. Alauddin Khilji was the founder of the Khilji dynasty. The next one is the Jalaluddin Khilji. The Jalaluddin Khiljis and their works, the monuments built in India. This is the flow chart. If in this way we teach the students have clear concept, have clear knowledge about the Khilji dynasty and each and every sections of the history in the sense of flow chart. This flow charts gives explore the knowledge of the students and concept, the ideas will be clear. The Khilji dynasty is founder of the flow chart in the front of the students. The students have asked many more questions to the teachers. अगर इस तरह के फ्लो चार्ट हम एंट्री करते हैं, जाते हैं क्लास के बोर्ड को पूरा का पूरा कवर कर देते हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। बच्चों के पास इस फ्लो चार्ट को देखते ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चंस, who was the founder of the Khilji dynasty? It is the center. The first one is the founder of the Khilji dynasty, and the second one is the Jalaluddin Khilji. Was the nephew of the Jalaluddin Khilji. Was the successor of the Alauddin Khilji, and the Khilji Jalaluddin Khiljis make built many monuments in India. So in this way, we ask many more questions. And question-based learning, students' concept clear about the Khilji dynasty. So the flow chart is very important in history, in social study. The flow chart after questions. The flow charts, questions based on the flow chart. जो questions होंगे वो आपके flow chart के बेस पे होंगे, बच्चों के द्वारा पूछे जाएंगे। आपके भी कुछ questions होंगे, आप बच्चों के से पूछ सकते हैं। It means to say this is the collaborative learning. Students and teachers both are talking is together. Both the concept, both the knowledge sharing in the class. Students के questions teachers के साथ, teachers के questions students के साथ। इस तरह से हम फ्लो चार्ट मेथड से अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को, अपने सोशल स्टडीज के कॉन्सेप्ट को बच्चों तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। बच्चे आसानी से उसको समझ सकते हैं और जिन बच्चों को हेजिटेशन हो रहे हैं उन बच्चों को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी मिलेगी। बच्चे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो कि साई नेचर के हैं उन बच्चों को हम खड़ा करा के पूछ सकते हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट of which dynasty?
This is the flow chart, gives us information about which history, Delhi Sultanate history, and who was the founder. So the first one is the founder of this dynasty. It means to say, if you want to teach attractive, if you want to social science make attractive and effective, this the flow chart is the best way to teach. Next one is the extra information. The teachers should have extra information. It should be must. I want to something about the flow chart. A flow chart is a diagram depicting process, a system, or a computer algorithm. It is the diagrammatically representations of the solution to a given problem. But more importantly, it provides a breakdown of essential steps to solving the problem. Each step is independent of implementation, as the flowchart only describes that should happen at the step. What input is needed and what the output of the step is, but it says nothing about how to implement the step. Once a flowchart is in place, it can help find less obvious features of the process that can then be refined to improve its efficiency. हम अपनी क्षमता को विकास कर सकते हैं, बच्चों के नए आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं थ्रू द फ्लो चार्ट. Then extra information, it should be must. Like that, the students ask to another questions which is different from this your topic. Never say this is the out of syllabus. आप यह नहीं कहेंगे कि यह आउट ऑफ सिलेबस है, हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे नहीं. नेवर से, आप क्लास में कभी ऐसा नहीं करेंगे. सो इट शुड बी मस्ट टू एक्सटेंड इंफॉर्मेशंस व्हिच वी हैव टू गिव द स्टूडेंट्स. जो भी उसके बारे में हमारे पास नॉलेज है, हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. देन आफ्टर उसको हम बोलेंगे कि इसको डिफाइन करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं आपके साथ, या आप हमें पर्सनल मिल सकते हैं इस पीरियड में, हम आपको क्लियर करेंगे. दिस इज द बेस्ट आइडियाज इन क्लास. नेवर से नो एंड नेवर से अबाउट द आउट ऑफ सिलेबस. सो relation planning topic is very important to make effective of our social science. The tip 3, interaction. Interactions means students interact with teacher. Without interactions, we can teach properly in our class. हम क्लास में जब हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चे जब हमसे कैजुअल फील नहीं कर पाएंगे, तब तक वो उनको हम पढ़ा नहीं सकते. पढ़ाना बहुत मुश्किल है. इंगेज योर स्टूडेंट्स. क्लास में एंट्री करते हैं, क्लास में एंट्री करते ही बच्चों से पूछते हैं हाउ आर यू स्टूडेंट. स्टूडेंट्स रिप्लाई आई एम फाइन. देन वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट द यस्टरडे क्लास. ओ, आपका जो कल का क्लास है ना, काफी अच्छा था. आपने जो कल अपने सोशल स्टडी के क्लास में जो आपने क्वेश्चंस बताया, वेरी नाइस. आज आप और अच्छे प्रिपेयर करके आए होंगे. इट मीन्स टू से दिस इज द रैशनल क्वेश्चंस व्हिच इज टीच इन द स्टडी क्लास. आस्क एंड टेक सम इंफॉर्मेशन. इस तरह से हम बच्चों से इंटरेक्ट कर लेंगे. एंट्री करते हैं क्लास में, आस्क देम क्वेश्चंस पूछते हैं. देन टॉक टू देम, और बात कर लेते हैं. क्या हाल चाल है, ठीक है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कौन से सब्जेक्ट में तुमको तो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, सारे सब सिलेबस कैसे चल रहे हैं. दिस ऑल आर वी आर इंटरेक्ट टू द स्टूडेंट्स. दिस ऑल आर द टॉपिक टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. ये सभी विषय हो सकते हैं. शेयर योर एक्सपीरियंस. कल की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस बच्चे ने क्या अच्छा किया. उनके अच्छे कुछ बच्चे 7th क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो चल अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बच्चे. उन सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे के द्वारा उस दिन जो अच्छा कार्य किया गया उसको शेयर करेंगे. शेयर सम स्टोरीज रिलेटेड टू टॉपिक.
अब हम कंटेंट पे आते हैं, और जो हमें कंटेंट पढ़ाना है इस बात के ही दौरान बोर्ड पे हमें लिख देना है। सम एग्जांपल्स इज गिवन हियर। जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी पढ़ानी है। हम ये जो लाइन आपके दी हुई है, 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, इस लाइन को जैसे लिखेंगे बच्चे में क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगा। ये सब क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मींस they attract the students, interact the students to focus on board। बच्चे बोर्ड को इंटरेक्ट करेंगे, बोर्ड से जुड़ जाएंगे, अब आपकी टीचिंग स्टार्ट, अब आपकी जो टीचिंग वहां से होगी वो बिल्कुल एक फ्लो में चलने लगेगी। पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी बताते समय आप इसको इंटरेक्ट करेंगे, दिस लाइन bring from the Prithviraj Raso, which is written by the चंद्रवरदाई, जो कि कोटैग हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी हुआ करते थे। और ये जो लाइन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चों को इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, या इंटरेक्शंस का एक सेंटर क्रिएट करते हैं। सो द नेक्स्ट Tip 4, the current knowledge. Use current affairs while teaching. It should be must to some information about the current affairs. If you are teaching a social study, save important newspaper articles, attach them in your notebook. Keep some extra facts in your pockets and share with your class. कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप अपने पॉकेट में रखें। जनरली हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा कहा भी जाता है कि हम अगर ब्लेजर पहनते हैं तो हमारे 2 पॉकेट हैं, दोनों पॉकेट में कुछ इस तरह के आइडियाज, इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के कुछ यूनिक फैक्ट्स हों जिसको हम क्लास के दौरान इंटरेक्ट करने के लिए या अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम निकालते हैं, बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बच्चे की क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ती है। इससे बच्चे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी नॉलेज को इंटरेस्ट से फुल कर देते हैं। इट मीन्स उसे फुल ऑफ इंटरेस्ट। सो द करेंट अफेयर्स play a very important role to teach in social study. Current affairs, this mode of engagement in the area of current affairs can be experimented with, which would serve the purpose of encouraging newspaper reading, enhancing students' general awareness, comprehensive topic coverage, deeper engagement with the subject, and most importantly, save valuable teaching time that can be beneficial. एक मैं केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि 7th क्लास के स्टैंडर्ड में मैं जब सोशल स्टडी पढ़ा रहा था तो उस समय मैं मनी पढ़ा रहा था, मनी के बारे में, ठीक है। तो उसमें मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच हेल्प्स टू बाई एंड सेल देयर थिंग्स। बट मैंने अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मनीज के बारे में बताया। तो एक बच्चे ने उसमें खड़ा होकर के पूछा कि सर पूरे कंट्रीज की अलग अलग मनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे वर्ल्ड की एक ही करेंसी हो, पूरा वर्ल्ड एक ही करेंसी यूज करे। इट मीन्स टू से वी हैव अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट शुड बी मस्ट टू करेंट अफेयर्स व्हाइल टीचिंग इन सोशल स्टडी। अगर हमें इस तरह के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हम बच्चे को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने बच्चे को बताया यस, पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी करेंसी है, डॉलर है, यूरो है। यूरो के एग्जाम्पल में रहता है, आज 19 कंट्रीज जो हैं यूरोप के यूरो करेंसी को यूज कर रहे हैं। जिस दिन यूरो को अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाए, इट मीन्स टू से वन करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी हो जाएगी। It is possible, but some issues and some problems also there. So the next tip 5, use of teaching aids. Use of teaching aids. Teaching aids is very important to teach social study. Chalk and board
क्लास में एंट्री करते हैं, आप क्लास में अगर हैं पढ़ा रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका बोर्ड भरा होना चाहिए। अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, चाहे वो बच्चों से लिए जा रहे हैं या टीचर्स आपके द्वारा बताए जा रहे हैं, पूरे पूरे बोर्ड्स को एकदम से कंप्लीट फिल्ड, ताकि देखने के बाद लगे कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है आपका बोर्ड। चॉक एंड बोर्ड का प्रॉपरली यूज। मॉड्यूल्स अगर आपके पास हैं, जो टॉपिक हैं, टॉपिक बेस्ड मॉड्यूल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास मैप्स, ग्लोब्स होने चाहिए। सो मॉडल्स, दिस इज द use of teaching aids to make effective of your teaching in social study. Use of teaching aids. The teaching aids are an internal component in any classroom. The many benefits of teaching aids include helping learners improve reading comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instructions, and relieving anxiety or boredom by presenting information in a new existing way. Teaching aids also engage students. Other since there are no limits in what aids can be utilized when supplementing a lesson. Teaching aids proved to be formidable supplement for teachers when the reinforcement of a skill or concept is necessary. Not only do they allow students more time to practice, but they also present the information in a way which offers students a different way to engage with the material. Of course, this is important in order to reach the various learning types in class. यदि हमारे पास इस तरह के टीचिंग एड्स हैं, हम उस टीचिंग एड्स को यूज कर सकते हैं अपनी बेस्ट टीचिंग में। The best way of teaching means we use a different modules, different type of things used to teach of this particular subject. The next tip, the tip 6, create your own library of information. जैसा कि आपको मालूम है कि हमें लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन का सेंटर माना जाता है, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लाइब्रेरी। हमारी पर्सनल एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए खुद वो एक गाइड के रूप में हेल्प करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स, वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर. If we teach a subject, if we teach any topic of our concerning subject in a social study like that, in the civics and geography, given here the vote your conscience, it means to say this photo, this pictures gives us information about the advertisement. We ask to the students from this chapter, from these photographs, it belongs to which type of advertisement. This vote your conscience is the advertisement type of what? Type of advertisement which is commercial, social, political. It means to say vote your conscience is the social advertisement. But लोगों को वोट करने जाना है. It is your democratic right. यह आपका अधिकार है. तो हम कहने के किसी न किसी रूप में बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम बच्चों को इंटरेक्ट करा सकते हैं और उस कंटेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं. Second one is the pictures is given here. Here is you are seeing in these pictures the dry grasses are available there and some scattered trees are available there. So these fields, these grasslands, this field show like a grasslands. So we can ask to the students, these fields
This belongs to which type of grasslands? Means what? The grasslands, which is belongs to the different type of grasslands in our across the world. So please give the name of this grasslands. So the students interact this topic, interact this fields, and gives us information. The natural vegetation and wildlife. I want to some feedback from this teacher sides. Am I right to create your own library of the informations, and this type of photographs gives us more interactive, more effective for social science teaching? I want to some feedback to the Satranjan Pandey sir. Sir. Satranjan Pandey sir. Sir, firstly, unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ask again. I want to some suggestions, some feedback from this topic, sir. Yes, sir. Very good. Very excellent. Excellent. Sir, create your own library of the information, collect pictures, videos. The videos and pictures are make effective to teach social science or each and every subject. Like that, you are the math teachers. You use a different type of shape of angles, shape of triangles, and Yes. so this is the effective to make effective your class. Yes, sir. More effective. Okay. It will be more effective. Okay. Okay. When you show it by different kinds of diagrams, different kinds of apparatus, it will be more effective. Yeah. So I want to some feedback to the another teacher. Please, if you are audible. So please, anyone? Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, yeah, you're true that pictures and videos creates a great impression on the kids in the session of learning. As I'm a science teacher, and me too, I believe in having more and more pictures and videos rather than just teaching them through books, because audio visual is the best way, I think, to teach our kids. And nowadays the thing is that being more they are just used to have lots and lots of videos and pictures, and they love watching it. So I think this is the best way to teach, not even science, but all the subjects, I believe. And the teachers should use it in every classes, so that it becomes more interactive and more interesting for other students to learn. Yeah. Even the weakest, even the more even such type of student who doesn't pay lots and lots of attention, they can also grab the attention, and they can have lots of information from that topic. So Sure. this is the best way, I believe. Yeah, sure, ma'am. Thank you. Thanks a lot Thank you. For the suggestion. So Very the next, well said, Ashwani sir. yes, sir. Rajat Tiwari, yes. Welcome. Creating our own library is very important one, because the teacher can understand what is relevant to his or her subject. Yes. So if we have the proper knowledge, proper picture, proper photographs, so we can make it available to the student, and it really helps them. Yes. Sure, sir. And what happens in junior classes? In junior classes, more or less, we are our much focus is on the visual side. Lots of picture, photographs available to them. But as we grow to the higher classes, our education is based on maximum text-based. Yes, sir. So proper combination is very important. And for this, we must have a very good collections of picture, video. Our own library is very important. Sure, sir. If we are, it is the duty of our teachers to collect the pictures and videos from the concerning topic to interact with the students. Okay, sir.
Sure, sir. Sure. Yeah, yeah. Okay, thank you, sir. So the next topic is for the tip 7, appreciation. If you want to interact with the students and want to make effective of our class, so clapping. Any students complete your homework in a good manners, so clapping for the students. Then next we can say that by the teachers, very good, excellent, mind blowing. This is the appreciation words are very motivating to the students to do better, best. So this is the words is very motivating words and improve the personality of the students. If we appreciate the students, the praise is when you tell your child that you like what they are doing or how they are behaving. For example, great job, well done, ovation. The praise nurture your child confidence and sense of self. Some children, especially those who are less confident than others, need more encouragement than others. When praise is focused on efforts, children are more likely to see trying hard as a good thing. In itself, they are also more likely to keep trying and to be optimistic when they face challenges. हम हमारे जो मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं, हमारे जो अप्रिशिएटिंग वर्ड्स हैं, ये बच्चों को कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को बदलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें हमसे वो लिंक्ड भी होते हैं, हमसे जुड़ते भी हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं काफ़ी सेंसिटिव मैनर्स के होते हैं, और हम उनकी भावनाओं को अगर समझते हुए उनके कार्यों को अगर प्रेज करते रहें, उनके अप्रिशिएट करते रहें टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चे से और टीचर्स की कनेक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने लगेगी और हमारी टीचिंग इफेक्टिव होने लगेगी, और बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे विषय को वो ओन करता जाएगा, अपनाता चला जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट थिंग्स according to me. Tip 7, appreciation is very best way to learn to make effective of your class. Here is given the tip 8, say no to no. Means never say I will not explain this, never say it is not out of your syllabus. The teachers, it should be must to know to never use these words. कभी भी क्लास में हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें. क्यों? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे ये समझते हैं टीचर्स को तो कुछ आता नहीं है, टीचर्स हमारे क्वेश्चंस को जवाब दे नहीं पाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे बच्चे जज करते हैं. तो नेवर से नो, नॉट एट ऑल. नेवर से आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, नेवर. इट मीन्स हम अगर बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, बच्चे हमें अपना आइडल मानते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें अपने सीखने के लिए एक गाइड के रूप में मानते हैं. अगर उनको अपने सिखाने वाले पे ही बिलीव ना हो तो कैसे सीख पाएंगे? सो सबसे पहले बिलीव को गैदर करना है, हमें बच्चों के विश्वास को गैदर करना है. अगर बच्चे हम पे बिलीव करने लगे, देन वी कंप्लीट अ इफेक्टिव टीचिंग. हम विश्वास अगर हमारे बच्चों के साथ होने लगे, हम एक अच्छे और एक कंप्लीट एक इफेक्टिव टीचिंग को जनरेट कर पाएंगे. सो टिप 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन आवर पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स. इट शुड बी मस्ट. द नेक्स्ट वन इज द टिप 10, एक्टिविटीज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड competitions related to your topic in class. means to say एट ए टाइम. आज का समय हमारा कोर्स कंप्लीट है, हम रिवीजन करा रहे हैं. क्लास में 2 बैचेज बनाकर जनरली हमारे स्कूल में होते हैं, हम लोग कराते हैं ईच एंड एवरी क्लासेस. ये ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स एंड रिलेटेड योर टॉपिक, अपने टॉपिक को लेकर के हम बच्चों में डिस्कशन कराते हैं. कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सभी बच्चे उसमें इंटरेक्ट होते हैं और 1 to 1 उनके द्वारा आंसर्स पुट किए जाते हैं. क्विज कॉम्पिटिशन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल्स once time to time and time to time. Which competitions like that? In the previous years, we organized different type of competitions. Which competitions like the Jazbaji, Jigyasa. This is the different
kind of competitions organized in our schools, and it is a very motivating and it is a very effective to knowledge creations of the students. स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस तरह के क्विज कॉम्पिटिशन्स कहीं ना कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं और वो बेटर से बेस्ट करने की तरफ मूव करते हैं. So this is a very important to organize quiz competitions at your school. Role play. Generally, you are seeing social science exhibitions. In social science exhibitions, played by the class 7th students. The one student, Shambhavi, is playing a gracious of the Maharana Pratap, playing a very good role in the Maharana Pratap. Role plays is very important to understand, build their topic. अगर हम उस कंटेंट्स के या अपने हिस्ट्री के किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर उसके इवेंट्स को अगर रोल प्ले में अगर हम लाते हैं, अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर लेते हैं, इट मीन्स टू से दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कंटेंट्स. अभी सोशल साइंस एग्जीबिशन में पृथ्वीराज चौहान के गेस्टर्स में वलय प्रशांत के द्वारा हमारे क्लास 7th सी के स्टूडेंट्स के द्वारा प्ले किया था. इट मीन्स टू से रोल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. रोल प्ले इज वेरी इफेक्टिव टू मेक इफेक्टिव ऑफ आवर टीचिंग, सोशल स्टडी टीचिंग. सो द नेक्स्ट is one. I want to some informations. I want to some things about the co-curricular activities help in the holistic development of the students and assist in developing a critical skills and ability to be successful and happy in 21st century's life and workplace. आज 21वीं शताब्दी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे शिक्षा में क्रांति लाने का कार्य कर रहा है. Role in a project-based learning is that the facilitator. We are teaching, we are the teachers and we are teacher as a facilitator. हम आज facilitators की भूमिका में काम कर रहे हैं. Teachers जो हमारे हुआ करते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम स्टूडेंट्स के नॉलेज को डेकोरेट करने का काम कर रहे हैं. So the facilitator, they do not relinquish control of the classroom or students' learning, but rather develop an atmosphere of the shared responsibility. The instructor must structure and purpose question issues so as to direct the students' learning towards content-based material. The instructor must regulate students' success as intermediate translational goal to ensure students project. The students are held accountable to these goals through ongoing feedback and assessments. बच्चे या हम एज ए टीचर्स हम बच्चों को असेस करने के लिए या बच्चों को असेस करते हैं या बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंट्रोल करते हैं. हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं. आज का समय उनके एजुकेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्लासरूम में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि आज क्लासरूम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ओपन क्लासरूम के रूप में बनता चला जा रहा है. आज बच्चों के नॉलेज को हम कहीं ना कहीं सिलेबस में क्लास में हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में लिमिटेड नहीं कर सकते. So the tip 10 activity and project test is very effective to make teaching in social science. Tip 11, be a jolly good fellow. Be a jolly good fellow. हमें मुस्कुराते रहना चाहिए. बच्चों को ये नहीं लगे कि घर से जो आप परेशानियों को लेकर के आए पूरे क्लास में पटक दीजिए. ऐसा कुछ नहीं. हमें बहुत किसके पास परेशानियां नहीं, परेशानियां सबके पास है. बट डोंट स्कोल्ड ऑल द टाइम. बच्चों को हमेशा डांटते नहीं रहिए. ए तुम हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हो, बैठो. दिस वर्ड्स नेवर यूज. बी पेशेंट. कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं बात किए जाते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम विषय में आते हैं, पनिश करने लगते हैं. सो बी पेशेंट. कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके डिस्कशंस के वैल्यूज को, डिस्कशंस के पॉइंट को समझिए, सुनने का प्रयास करिए बच्चों को.
क्या डिस्कशन हो रहे थे, हमें भी बताइए, हम उसमें आप में कोई हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके टॉपिक एग्जाम आ रहे हैं, टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हो, कोई उसकी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं हो, किसी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसके डिस्कशंस के पॉइंट को उनके पास जा करके, उनसे मिल करके, उनसे इंटरेक्ट होकर के उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। तब मालूम चलेगा कि हम कितना उनको समझ पाए। बच्चे भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होने से बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती चली जाएगी। लव योर क्लास, क्लास में घुसिए वैसे जैसे लगता है अपने फैमिली के साथ, आपको अपने बच्चों के साथ मिल रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द टिप टू मेक इफेक्टिव ऑफ योर क्लास। द नेक्स्ट वन इज द टिप 12। द टिप 12 इज द अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों के अलग अलग डिफरेंसेस को समझना होगा। हम पहले ही कर चुके हैं कि बच्चे को क्लास में जब एंट्री करते हैं तो उनके माइंडसेट को समझते हैं। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, दोनों तरह के बच्चे हैं, अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं बच्चे, अलग अलग सेक्शन से आ रहे हैं। कोई के घर में खाना नहीं बना है, दिस ऑल आर, कोई भूखा आया है, किसी के घर में कोई परेशानी है। सो ऑल दीज आर द टीचर्स अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों की अलग अलग समस्याओं को समझना होगा। It is important for the teacher to know variables such as physical characteristics, intelligence, perceptions, gender, ability, learning styles, which are individual differences of the learners, and effective and productive. Learning teaching process can be planned by the considering these individual differences of the students. Since the learner's own learning speeds and his interests vary, these characteristics should be taken into the consideration by the teacher. हमें समझना होगा बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चे किस सोसाइटी से आ रहे हैं, बच्चे की क्या डिमांड्स है, नीड्स है, बच्चा चाहता क्या है। So, according to the research finding, half of the interviews, science teachers started that individual differences are important for determining the learning styles of the students. अलग अलग बच्चों की अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, सीखने की अलग अलग उनके स्टाइल्स हैं। So teachers also stated that in order to design the learning teaching process appropriate to the individual differences of the learners, the learners would make active participations in the relation, and individual differences could be supported by increasing the experiment and school trips. आपको याद होगा हम जो बच्चों के साथ पिछले 2019 में हमने जो ट्रिप किया था, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम बच्चों के साथ जिन बच्चों के साथ हम लोगों ने ट्रिप किया था, वो कहीं ना कहीं बच्चे आज हमसे वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम अगर मिलते हैं तो अपनी बातों को बताते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहते हैं। These all are make effective to understand the individual differences. Is given, my teachers pointed me with the rulers and said at the end of these rulers, there's idiots. I go detentions after. It means to say what? जब बच्चों को जब हम इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के जब नेचर्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं तो समझ में आता है कि बच्चा कहीं ना कहीं हमसे दूर जाता है और हम बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी में फॉर अवे करके उनकी टीचिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं करते। सो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम अपने बच्चों को अपने क्लोज लाना होगा, इफेक्टिव लर्निंग क्रिएट करनी होगी। देन आफ्टर वी विल डू बेटर, देन आफ्टर वी विल डू अ बेटर जॉब and we create a society, better society. I always use one words. If you want to think positive, if you want to change the world, first of all, we try to change something in our around us. So
This changing is not in an easy way. We will do hard work. Then after we got some changing in our society, in our environment. जब हमें एक हार्ड वर्क करना होगा तब जाकर के ये करना होगा, हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करने होंगे. So that's all for the my ends. I want to some feedback from our respected members. Sir, Girish sir, I want to give some views about this session. Okay, thank you very much, Ashwani sir. Congratulations. Certainly, we can say that it's one of the best session of our in-house training. Certainly, all the points what you have given the tips regarding the perfect teaching, proper teaching, that's essential. And what you have said that for the changes that should be start from themselves. Whenever we should be changed, then we can hope the change around us. Certainly, that should be start from themselves. Yes. We should change our mindset, our thoughts regarding the society, regarding our duties. Then we can hope and get. Certainly, we can get also a better society, better environment around us. And in this series, I would like to share something more with our efforts. How much we are careful about our efforts towards the students, class, and our family and society. That should be a start from very beginning, that the beginning that should be from themselves. Yes. Whenever we should be careful about themselves, we will be try to maintain our own dignity, our own duty. For that, whenever we should be prompt, certainly we can create the environment around us that should be positive, effective, and fruitful. Sure, Thank you. Thanks a lot sure, sir. to all the members. Once again, my special thanks to Ashwani Rai sir to participate as the resource person. Certainly, I hope that all the members of our school should be act as the resource person willingly and promptly in a proper way with the proper presentation, good slides, voice, everything. That's good. Thank you. Thank you very much to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now we can wind up our meeting. Yes, Ajit. Thank you, Ashwani Yes, sir. attendance And link will be Girish sir. shared by the Mithlesh sir. Mithlesh sir will be Okay. sent the attendance link just now. Mithlesh sir, please wind up this meeting. I think we are completed. So once again, thanks to all the participant members in our schools, dear respected members. Thanks a lot to join this valuable meetings, valuable teacher training. Thank you. And thanks a lot to our foundation family to give an opportunity to make a resource person of this session. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot.